Good morning, students. We have completed Unit 1 and Unit 2 के हमने Unit 2 भी हमने कंप्लीट कर ली है। केवल एक टॉपिक इसमें रह गया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वैरिंग लोड के जब मैंने shear force and bending moment diagram for a simply supported beam having a uniformly varying load at its whole length. Okay, टाइप्स ऑफ बीम्स हमने डिस्कस कर लिए थे। लोड्स, रिएक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन लोड, shear force and bending moment भी डिस्कस कर लिया। shear force and bending moments of cantilever beam, pin support and roller supported beam subjected to concentrated loads, uniformly distributed load and constant varying load। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए बेसिकली अभी हमारा एक डेरिवेशन रह गया ये shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ए थर्ड केस, a uniformly varying load acting at its whole length let us consider a simply supported beam subjected to a uniformly varying load. The intensity of varying load varies from point A to point B. The length of the simply supported beam is L. And the intensity of uniformly varying load is varies from point A to B. The intensity of load at the point A is 0 and the intensity of load at the point B is W Newton per meter. Okay, the intensity of load is W Newton per meter. So first of all, for the first step in this for drawing the shear force and bending moment diagram for a simply supported beam is we have to determine the calculating the reaction at the end points। सबसे पहले हमें एंड पॉइंट्स पर रिएक्शंस डिटरमाइन करने होंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये। तो एंड पॉइंट पर कंडीशंस रिएक्शंस फाइंड आउट करने से पहले हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो हम फोर्स एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फोर्स एनालिसिस करने के लिए हमें इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। तो जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। लेट रिएक्शंस एट द पॉइंट ए एंड बी आर reactions at points A and B are RA and RB respectively. Okay,
respectively. The total load due to this uniformly varying load will be equal to the total area of this uniformly varying load ACB. Here the length of the beam is AB and the intensity at the point B is W. So the total area of this triangle, area of right angle triangle ABC is equal to 1 by 2 perpendicular into base, 1 by 2 W into L, and this load will passing from the center of gravity point of this right angle triangle. As we know that the center of gravity point of a right angle triangle is, if the height of the right angle triangle is h and the base of the length of the base of the right angle triangle is a, in that case from here, from the perpendicular, the distance of the center of gravity point is a by 3, and from the base the distance of the center of gravity point is h by 3. So from here, center of gravity of this right angle triangle, or we can say that the total load of this uniformly varying load will passes from the center of gravity of this right angle triangle, which is at L by 3 from the point B. Okay, so the total load will passes from the WL by T2 will be passing from the at a point from L by 3, at a distance of L by 3 from the point B. The remaining distance of this CG point from the point A will be 2L by 3. Okay. Now, because the beam is in equilibrium condition, now applying the equilibrium equation, the first equation is the algebraic sum of all the vertical forces along the y-axis should be equal to 0, because there is no horizontal force acting along x-axis or acting along the x-axis. Here two forces are acting in upward direction at the point A and B, reaction RA and RB. RA plus RB is equal to, and only a load is acting in downward direction, WL by 2. So RA plus RB, upward force equal to the downward force. So this is the equation number 1. Now taking moment of all the forces about the point A should be equal to 0 for equilibrium. Okay. So from here RA into 0 force, magnitude of force multiplied by perpendicular distance. So perpendicular distance of this reaction is 0 from the point A, because it passes from this point. Now RB into L is equal to the WL by 2 into 2L by 3. So from here RB will be is equal to the okay, RB will be equal to the WL by 3. Reaction at the point B is WL by 3. Now from the equation number 1, RA is equal to the WL by 2 minus WL by 3
it is equal to WL by 6. Okay, the reaction at the point A is WL by 6. इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सिर्फ एक ही लोड आपका अप्लाई हो रहा है, जो कि यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। तो यहाँ पर उस लोड की वजह से कोई और वेरिएशन नहीं होगा बीच में। तो हम पूरा थ्रू आउट द बीम एक सेक्शन लेके एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक ही लोड है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोड्स नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए सेक्शन। एक ही सेक्शन लेंगे और सेक्शन के अलोंग हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैलकुलेट कर लेंगे। Let us consider a section XX at a distance x from the point A. Between AB, between the point AB. Okay. Now, अगर हमें अब फोर्स एनालिसिस करना है इस कंडीशन में, तो सबसे पहले सेक्शन की लेफ्ट साइड में ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इससे हमें इसको कन्वर्ट करके एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। ओके, नहीं तो हम लोग इसकी फोर्स एनालिसिस नहीं कर सकते। इस पॉइंट को मान लेते हैं C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E। C से B तक की डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस W है। बीम की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ L है, हमें पता है। अगर हमें इस सेक्शन ए डी से जो भी लोड आपका अप्लाई हो रहा है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमें टोटल लोड निकालना होगा, कितना लोड अप्लाई होगा। और जो टोटल लोड होगा यहाँ पर वो इस राइट एंगल ट्राइंगल AED के बराबर होगा, यहाँ पर AED के बराबर। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें E से D तक की लेंथ नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ABC, जो साइड्स के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर ED अपॉन AD विल बी इक्वल टू दी BC अपॉन AB, ये होगा। यहाँ ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू W, AB इज इक्वल टू L, AD इज इक्वल टू X. So ED will be is equal to WX by L. Now the area of right angle triangle AED will be equal to the 1 by 2 base into height, which is WX by L. So the total area WX square upon 2L. This will be the total load due to the uniformly varying load applying at the left side of the section, and this load will passing from its center of gravity point. Here the center of gravity point will be at a distance of x by 3 from the section. Okay,
and the load is Wx square upon 2L. पॉइंट ए पर जो एक रिएक्शन है वो है WL/6। अब हम इसका सिंपली फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का। ओके, shear force variation and for bending moment diagram. Okay, shear force and bending moment. अब shear force एंड हम लोग बेंडिंग मोमेंट और shear force की इक्वेशन बनाएंगे। shear force about the section XX इक्वल टू दी, यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव होगा WL/6 प्लस दूसरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस में WX²/2L। WX²/2L, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसे सॉल्व, अभी इसे और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको शेयर फोर्स इक्वेशन विल बी शेयर फोर्स X will be equal to the WL/2 या W/2 ही कॉमन कर लेते हैं सिर्फ इक्वेशन से। यहाँ ये होगा L/3 माइनस X² अपॉन L। This is the equation number 2. Okay, now bending moment equation. Bending moment XX, WL/6 into X plus minus WX² upon 2L into L/3। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। WL/X/6 माइनस WX² अपॉन 6, दोनों ही इक्वेशन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और और इन दोनों इक्वेशन से पैराबोला एक ड्रॉ होगा। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द एंड कंडीशंस एट पॉइंट ए x is equal to 0, at point A x is equal to 0, shear force at the point A will be equal to WL/6। Okay, and the bending moment about this point about the point A will be equal to the 0। तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स हो गया WL/6 पॉजिटिव और बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारा यहाँ 0। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट at point B, x is equal to L, shear force at the point B will be WL/6
minus WL square upon 2L. WL by 6 minus WL upon 2, or say WL minus 3WL upon 6, or say minus WL by 3. Shear force about the point B will be equal to the minus WL by 3. Now, the bending moment about the point B will be bending moment about the point B will be wait a minute. Wait a minute. Okay. Bending moment about the point B will be equal to, इक्वेशन क्या है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की, डब्ल्यू एल एक्स बाई 6 माइनस WX² by 6, WL² by 6 माइनस WL² by 6, ये ज़ीरो आ गया. ओके, हेयर shear force at the point B is the minus WL/3, और ये दोनों पॉइंट्स एट द पॉइंट ए पर जो शेयर फोर्स है और एट द पॉइंट बी पर जो शेयर फोर्स है, ये एक पैराबोला से कनेक्ट होंगे कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दोनों ही पॉइंट पर बेंडिंग, सिंपली सपोर्ट बीम के केस में आप देख लीजिए कि एंड पॉइंट्स पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ज़ीरो ही आता है, और मैक्सिमम जो होगा सिंपली सपोर्ट बीम के केस में बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पर शेयर फोर्स ज़ीरो होगा उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. यहाँ जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा. इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं बेंडिंग इक्वेशन को और उसको इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के बराबर कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं. Differentiate the bending moment equation with respect to x. W L by 6 minus 2W x अपॉन 6, इसको ज़ीरो के बराबर कर देते हैं. यहाँ से ये आ जाएगा x by 3 is equal to the L by 6, WX² 2x². Okay, WL by 6 minus 2WX by 6, so it will be 1 by 3. X is equal to the, no,
एक सेकेंड, ये x/3 है, बेसिकली x³/6 होगा यहाँ पर। लोड कितना है, wx²/2l, wx²/2l इंटू x/3, तो ये वैल्यू आएगी wx/6l। अब इसे जरा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 3wx²/6l। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। 3wx²/6l इज इक्वल टू wl/6, w से w कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, x² = l²/3, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी l/√3। x = l/√3 पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। वैल्यू निकाल लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। एट x = l/√3 इज इक्वल टू, वैल्यू कैसे निकालेंगे, wl/6 माइनस wx³ / 6l, और यहाँ x भी होगा। ओके ओके, वैल्यू रख देते हैं, wl/6 √3l² माइनस wl³ / 6 इंटू 3√3 इंटू l। सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं wl²/6√3, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। सो इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। 2/3 इंटू wl²/6√3, दिस इज 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई wl²/9√3। Okay, this will be the maximum bending moment in the case of a uniformly varying load at its whole length. shear force आपका 0 होगा l/√3 पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम, उसका मैग्नीट्यूड होगा wL²/9√3।
नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जैसे मिक्स केसेस होंगे, इसमें पॉइंट लोड भी होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी होंगे। तो इस केस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड केसेस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम बनाते हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, consider a cantilever beam having a point load at its free end of 10 kilonewton with a uniformly distributed load of intensity 2 kilonewton per meter. The length of this uniformly distributed load is 3 meters and this length is 4 meters. Okay, we have to draw the इस केस के लिए हमें shear force और bending moment डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बीम है हमारे पास, ए बी बीम है, और यहाँ पर सी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ओके, तो कैंटिलीवर बीम के लिए अब आपको एनालिसिस करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लोड है जो ए से सी तक वेरिएशन करेगा, फिर सी से बी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और ये पॉइंट लोड दोनों की वजह से ही यहाँ पर वेरिएशन हमें दिखेंगे। तो इस पॉइंट तक एनालिसिस के लिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन लेना होगा। तो सबसे पहले तो हमें अगर एनालिसिस करना है तो ए से सी पॉइंट के लिए हमें कंसीडर करना होगा, सेक्शन लेना होगा, और ए से सी के लिए हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इक्वेशंस बनाने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शेयर फोर्स वेरिएशन के लिए बना देता हूँ, और नीचे बेंडिंग मोमेंट के लिए वेरिएशन। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ पर स्टेप में ए से सी के बीच में सेक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ए। अब इस सेक्शन के अबाउट हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस बनानी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे
let us consider a section XX at a distance x from the point A between A से C के बीच में हमने सेक्शन लिया है। नाउ द शेयर फोर्स, अब ये इक्वेशन जो शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की हम बनाएंगे ये सिर्फ A से C पॉइंट तक के लिए वैलिड होगी। तो शेयर फोर्स जो आएगा बेसिकली वो आएगा -10 किलो न्यूटन, केवल एक ही यूनिट पॉइंट लोड आपका अप्लाई हो रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ द बेंडिंग मोमेंट xx विल बी इक्वल टू दी, जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, ये माइनस में आएगा। तो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो इसकी एक्स है, तो ये हो गया -10 इंटू एक्स किलो न्यूटन मीटर। इक्वेशन नंबर 2। अब एंड पॉइंट्स पर हम वैल्यूज निकालते हैं। एट पॉइंट ए x इज इक्वल टू 0। शेयर फोर्स की इक्वेशन देखिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है x से, तो शेयर फोर्स वैरी नहीं करेगा, ये -10 किलो न्यूटन ही होगा पॉइंट ए पर। और बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें ए पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट होगा 0। ओके, तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई -10, और बेंडिंग मोमेंट है हमारा यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट सी पॉइंट पर हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। एट पॉइंट सी x इज इक्वल टू 4 मीटर्स। शेयर फोर्स वैरी नहीं होगा, शेयर फोर्स पॉइंट सी पर भी होगा -10 किलो न्यूटन का ही। बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट सी will be equal to the -10 into 4, it means 40 -40 किलो न्यूटन मीटर। यह आ गया 40 किलो न्यूटन मीटर आपका बेंडिंग मोमेंट। shear force will remain constant from A to C, and bending moment at the point C is 40 किलो न्यूटन। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट की, तो इसे एक लाइन से हम मिला सकते हैं। ओके, अब हमें अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को देखना है सी से बी के लिए, तो हमें सेक्शन लेना होगा सी से बी के बीच में। यहाँ पॉइंट लोड है ए पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन्स का, सी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यहाँ पर अब हम अगला स्टेप होगा, लेट अस कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए। नाउ ये डिस्टेंस कितनी होगी, रिमेनिंग डिस्टेंस ए से सी तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस होगी x -4। अगर हमें फोर्स एनालिसिस करना है इसमें,
तो फोर्स एनालिसिस करने के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हटाना होगा हमें और पॉइंट लोड लगाना होगा। टोटल लोड जो होगा इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से वो हो जाएगा इंटेंसिटी टू किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये x-4 डिस्टेंस पर है तो 2 इंटू x-4 डिस्टेंस पर होगा, और जो डिस्टेंस होगी सेक्शन से इसकी वो होगी x-4/2, x-4/2 ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। ओके, अब हम इस इक्वेशन यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस को बनाएंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर a section XX at a distance x from the point at a distance x from the point A between CB. Okay, now the shear force about this section XX will be equal to the one downward force minus 10, other is also a downward force minus 10 minus, not minus 10, minus 2 into x minus 2. Okay, minus 2 minus 2 into x minus 4. Okay, solve this equation. Shear force about the section XX equal to the minus 10 minus 2x plus 8. Minus 2 minus 2x. This will be the final equation for the shear force about the section XX. Equation number 3. Bending moment about the section XX will be minus 10 into x. देखिए माइनस क्यों लिया है, एक्स क्यों लिया है, देखिए सिंपल चीज़ें हैं, हमें इसको याद रखना है। जो टोटल लोड है 10 किलो न्यूटन का, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड इट विल प्रोड्यूस ए काउंटर क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स। Here the magnitude of the load is 10 kilonewton and the perpendicular distance of this load from the section x is x. So the total bending moment about the section x due to this 10 kilonewton force will be equal to the 10 into x. Here the bending moment is in counterclockwise direction, so the sign of this bending moment will be negative. So the bending moment due to the force 10 kilonewton is minus 10 into x. Now come to the next point load, which is 2 into x minus 4. It is acting at the distance of x minus 4 by 2 from the section xx, and this force also produces a counterclockwise direction bending moment about the section xx. So this bending moment will also be a negative bending moment. So here minus 2 into x minus 4, the bending moment will be 2 into x minus 4 into x minus 4 by 2. So it will be equal to the minus 2 into x minus 4 whole square by 2. Now solve this equation, we will get the bending moment about the section xx. Okay. Now the bending moment will be minus x minus 4 whole square. Okay. Shear force equation is a linear equation, and the bending moment equation here, the bending moment equation is a
quadratic equation. So from this bending moment equation we will draw a parabola. Okay, now for drawing the shear force and bending moment diagram, find out the values of shear force and bending moment at the end points. At point C, x is equal to 4 meter, shear force will be equal to the -2 into 4. So 8 minus 10. Shear force at this point is minus 10 kilonewtons. Okay. Now the bending moment about this point C will be equal to the minus 10 into 4 minus 4 whole square. It will be equal to minus 40 kilonewton per meter. As okay. Now determining the values of shear force and bending moment at the point B. At point B, x is equal to the 7 meters. 7 meters total distance, length of the beam is 7 meters. Okay. Now the shear force at the point B will be -2 into 7 minus 14 kilonewton. Okay, and the bending moment about the point B will be equal to the minus 10 into 7 minus 7 minus 4 to the power 2. It will be equal to minus 70 minus 9. Okay, so the bending moment about the point B will be minus 79 kilonewton per meter. Here the bending moment equation is a quadratic equation. A parabola will be drawn, and shear force equation is a linear equation. Then these points can be joined by a line, by a straight line. Okay, shear force about this point will be equal to minus 14 kilonewton. Okay, and the bending moment equation is a parabolic equation, and the magnitude of this it will goes like this. Freely we will draw the curve freely, by freehand. The bending moment about the fixed end is minus 79 kilonewton per meter. As we know that in a case of a cantilever beam, the maximum bending moment will occur at its fixed end. Okay, so this is the bending moment diagram for the problem, and this is the shear force diagram for the given problem. Okay, so we can draw shear force and bending moment diagram for any beam having combination of loads, of point load, uniformly distributed load, or uniformly varying load. Similarly, okay. Okay. नाउ यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे स्ट्रेसेस एंड बीम्स में, नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.